Metals in industry. Beryllium metal. Beryllium is in the form of beryllium oxide, beryllium metal. Beryllium is in the form of beryllium oxide and beryllium metal. Beryllium metal and metal alloys. These are found in consumer products such as electronic devices, example TV, calculator, personal computer, and non-sparkling tools. Beryllium metal and metal alloys कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलता है. Direct contact with metal and metal alloys enclosed with protective case that prevents exposure. मेटल अलॉय के डायरेक्ट कांटेक्ट से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता बिकॉज ये प्रोटेक्टिव केस से इनक्लोज रहता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेटल एंड मेटल अलॉयज enclosed with protective case that prevents exposure. Health effect to beryllium exposure. Health effect to beryllium exposure क्या क्या होता है? 3 तरह का होता है. Beryllium sensitization, chronic beryllium disease, lung cancer. Beryllium sensitization, chronic beryllium disease, lung cancer. Beryllium sensitization ये किससे किससे होता है? By inhalation and skin exposure. Beryllium sensitization by inhalation, skin exposure. Chronic beryllium disease CBD is a chronic granulomatous lung disease. Chronic granulomatous lung disease. CBD is chronic beryllium disease is pneumoconiasis. Chronic beryllium disease के साइन ऑफ सिम्टम सार्कोइडोसिस जैसे होते हैं. क्रोनिक बेरिलियम डिजीज के साइन ऑफ सिम्टम्स सार्कोइडोसिस के जैसे होते हैं. लंग कैंसर, इससे और क्या होता है? लंग कैंसर होता है. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू बेरिलियम कॉजेज लंग कैंसर. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू बेरिलियम कॉजेज लंग कैंसर. IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, classified beryllium as group 1 carcinogen. Group 1 carcinogen, carcinogenic to humans. बेरिलियम को IAR ने क्लासिफाई किया है, इंडियन एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने, ग्रुप 1 कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में. Acute beryllium disease. Acute beryllium disease is a rapid onset form. Of chemical pneumonia. Acute beryllium disease is a rapid onset form of chemical pneumonia. Medical examination, smoking history, skin rashes, pulmonary function test, beryllium lymphocyte proliferation test. Beryllium lymphocyte proliferation test BELPT, beryllium lymphocyte proliferation test, or BAL fluid, BAL fluid, bronchoalveolar lavage fluid, bronchoalveolar lavage fluid obtained from lung directly from bronchoscopy is used to distinguish between beryllium sensitization and CBD. Treatment: no cure for CBD, can be treated by corticosteroid on oxygen to each symptom. First line treatment, corticosteroid. CBD restrictive disorder. IARC classified beryllium as group 1 carcinogen, carcinogenic to humans.